Tell me one thing. Say if you get a client and the client is from real estate industry. Yes. Now they want leads, they have to sell their projects, right? And they think that after 2-3 months it will be very difficult. Difficult time is coming after 2 to 3 months. Now they have a very limited time width. Yeah. Okay. So in that time period, if they have to sell their maximum number of projects, so you have limited time and you have to do such marketing that you are going to sell their projects immediately. What will be your strategy for that real estate project? Okay, so really, it is real estate और real estate का सबसे पहले दिमाग में आता है that it is a heavy project और उनके पास बजट भी ज़्यादा होगा. If they are selling like a 15 लाख या 20 साल का कोई प्लॉट सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका बजट भी हाँ होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कस्टमर की नीड्स क्या है और हमें किस कस्टमर तक पहुंचना है. So उनके साथ लिमिटेड टाइम है 4 months 5 months. So I directly go with ads. Why ads? Because अगर मैं ads के साथ नहीं गया और मैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मेथड में गया so it will take time to build the brand and all. But if I want to sell it directly to customer who needed the plot and urgent they want house, so I'll directly go with ads. Which ad type you will choose? I will choose the 2 types of ads, Google ads and Facebook ads, which is fascinating to reach people. Okay. And in Facebook ad, what will be your strategy? सबसे पहले मैं ब्रांड करूँगा, जितने ज़्यादातर लोगों से पूछ सके मैं वो करूँगा, ब्रांड अवेयरनेस करूँगा, रीच करूँगा हो सके तो. और मुझे लीड चाहिए तो सबसे पहले मैं लीड्स कैंपेन भी चलाऊंगा जो है लीड जनरेशन कैंपेन और उसमें भी फॉर्म फिलिंग का. So we can contact them later or call now. Okay. So you will start generating leads through lead generation ad. Yes. And what if somebody engaged or what if somebody already visited your website? How you will retarget in Facebook ads? If the real estate have a website and we can collect the data from the pixel and we can put it on the Facebook ads, so we can target those people who already visited the website. Okay. So it is a highly possible chance for them to convert them. Okay. So you will retarget through pixel. Yes. And in that case, in Facebook advertisement, apart from website visitors being retargeted, what all retargeting options we have? कौन-कौन से हैं हमारे पास retargeting के options? सर lookalike audience है और custom audience है और हम बना सकते हैं कि फेसबुक पोस्ट अगर किसी ने ऑलरेडी लाइक किया हम उनको इंगेज कर सकते हैं, किसी ने शेयर किया वो उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं, जिन्होंने विजिट किया उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी ऑप्शन टू रीटारगेट पीपल. Not just on the website, but those who also engage in our post or video. Okay. मेरे पॉडकास्ट को किसी ने सुना है, मैं उसको रिटारगेट कर सकता हूँ? पॉडकास्ट हाँ सर रिटारगेट कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट फेसबुक लाइव की आप बात कर रहे हैं तो हाँ यू कैन टारगेट दोस पीपल. नहीं, पॉडकास्ट मींस सिर्फ ऑडियो फाइल होगी, राइट? सिर्फ ऑडियो फाइल वाली पॉडकास्ट मैंने क्रिएट की है रिसेंटली और मेरे पॉडकास्ट को सुना कुछ लोगों ने, तो क्या मैं उनको फेसबुक पे रिटारगेट कर सकता हूँ? अब सर पॉडकास्ट को नहीं कर सकते, हम वीडियो को कर सकते हैं. वीडियो कर सकते हैं. पॉडकास्ट के केस में होगा कि अगर हमारी वेबसाइट पे पॉडकास्ट एम्बेडेड है तो एज अ वेबसाइट विजिटर कर सकते हैं, बट एज अ फेसबुक आप सीधा MP3 पोस्ट नहीं कर सकते, आपको वीडियो फॉर्मेट में पोस्ट करना पड़ेगा. दैट्स गुड. सो एंड गूगल एड्स में क्या होगी स्ट्रेटजी रियल एस्टेट के लिए? सर गूगल एड्स में हम सर्च एड्स चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले एड्स चला सकते हैं. हमें ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना फिर डिस्प्ले एड्स से वेरी गुड, बट अ सर्च एड इज highly conversion ads because people are already searching for it and we are reaching those people who are interested already. So it is highly possible to convert the ad, you know. Okay. So display ad की retargeting कैसे होती है गूगल एड्स के अंदर? डिस्प्ले ad चलाना है मुझे. Now I just want कि let's retarget people who came on my website or visited a specific page. तो डिस्प्ले ad की गूगल एड्स में retargeting कैसे होती है? सर फेसबुक एड्स में बहुत ही अच्छा फीचर है जो सेगमेंट है हमें देता है गूगल एड्स के अंदर. हाँ गूगल एड्स के अंदर हम कस्टम सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं. हम वो वेबसाइट निकाल सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है और हम उन वेबसाइट के जो विजिट करते हैं जो विजिटर्स है हम उनको टारगेट कर सकते हैं और जो कि फिर गूगल ऑप्शन प्रोवाइड करता है कस्टम सेगमेंट बनाने का. वो
जो हम अगर वेबसाइट पे से लिंक ही पोस्ट करें तो हमें कर सकते हैं कि विद इन 90 डेज जिन्होंने इस वेबसाइट को विजिट किया है हमें उनको टारगेट कर सकते हैं उनको या फिर उनके सिमिलर वेबसाइट्स को. That is in custom segment. Now अपने खुद के वेबसाइट को अगर विजिटर्स को रिटारगेट करना हो तो हाँ सर कर सकते हैं. So we just need to put a link and we need to have a cookies in our website to retarget those people. Okay. So हमारी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का कोड्स के थ्रू रिटारगेटिंग है. अच्छा, when it comes to SEO, do you think SEO works nowadays? I think it's a funny question because without SEO, no website is going to rank unless and until you are going to pay $1 million to rank the website. To whom you will pay? Google. Okay. There are many search engines, Google, Bing, but the most popular is Google. So without SEO, no website is going to rank the first on Google page. SEO is the main and essential method to rank. But then the thing is, nowadays, a lot of companies are running paid advertisement, right? First 4 slots are already filled with advertisement. Now your SEO result is coming on 5th position. So do you think it works now? You know, sir, as a human psychologist, people trust more on organic less than I. Okay. Yes, and that's why SEO works. Because suppose I do not want to buy any product. I just want the information that I like to find it. Okay. So I will search on Google. Yeah, I see the 4 ads. पहले के 4 ads देखे. मैं नीचे आया क्योंकि मुझे ads में इंटरेस्ट है. मुझे कुछ प्रोडक्ट बाय नहीं करना. मुझे genuine information में इंटरेस्ट है. So people click on organic result more than ads because people trust more. Yeah. Okay. Now in that case, if you are saying मुझे बाय नहीं करना है इसलिए मैं नीचे आया, फिर तो नीचे वाले जो रिजल्ट हैं उन पे तो बायर पर्सोना है ही नहीं, मतलब वो बाय वाला बंदा आ ही नहीं रहा वहाँ. So it is depend on intention ना, मतलब कौन सा बंदा किस इंटेंशन से गूगल सर्च कर रहा है. So उसको कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, so ऐड उसके लिए हमेशा वर्क करेंगे. Okay. मतलब 90% है, और जिसको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए ये वो तो ऑर्गेनिक rather than ads. Okay. Now tell me one thing. SEO and basically Google's algorithm. Yes. Now you can see that Google is trying to showcase a lot of information by itself. Yes. They are not, they are actually restricting websites and they want user to see the information on Google search engine result page only. Yeah. A lot of information like time, dollar conversion, and many things are there. So how that kind of websites will survive? Those websites who were used to have time changing or time conversion methods or unit conversion like methods, calculator type of websites, they were there, right? So how that kind of website will sustain nowadays when Google is showcasing this type of information? So there is one major advantage that these websites are not Google. So when Google provide a feature, it is a basic feature. आप कभी भी देखोगे ना, लाइक आपको ना डॉलर रुपीस को देखना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो सिर्फ गूगल 2 ही फीचर देगा कि ऊपर डॉलर डालो और नीचे रुपीस डालो, फिर उसको देखिएगा वो कितने रुपीस में आता है. सो इट इज अ बेसिक फीचर. लेकिन जो वेबसाइट जो प्रोवाइड करती है जो डेटा, इट इज अ वेरी एडवांस फीचर और लोग उसको ज़्यादा पसंद करते rather than वेरी सिंपल फीचर. हाँ, अगर यूजर को अगर टाइम की कमी है, ही जस्ट वांट इंफॉर्मेशन लाइक क्विक एंड इजी, so you can just click on the basic feature. Okay. Yeah, I think. All right, that is a good point. So tell me, say, if a website owner nowadays comes to you, and it is very common in SEO, they will say, all right, I can pay you, but I want my website to rank within a month. What will be your response to that client? We can rank on every keyword of the Google, right? Okay. So हमें उनको पहले समझाना पड़ेगा कि आपको कौन से कीवर्ड पर रैंक करवाना है. अगर उस कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, so it is hard to rank. हाँ, अगर उस कीवर्ड की डिफिकल्टी सिर्फ 2 या 3 या 5 से ज्यादा, so we can rank in a month. Yeah. Okay, in a month you can make it rank? If the competition is very low. Okay. Yeah. And what if it doesn't happen? How you will handle that situation? Say for example, we promised a client that within a month we are going to make it rank. Now we have month end, and his website is still on 7th, 8th position. How you will handle that situation?
Now he will come to you asking that you promised. Yeah, I promise. I think I'll do my best to rank on the website, but it also depends on a competition or circumstances that SEO has. We can't just magically push the website in a first page, first rank. So there are two types of mainly SEO method, which is a black hat SEO and a white hat SEO. Okay. So as a SEO, we are always trying to do a white hat SEO, not a black hat. Black hat SEO usually have keyword stuffing, two more backlinks for the unauthorized website. And if I want to rank my website for a first page on Google, we need to have a clear backlinks. Those another website. No, that I totally agree. You need to have all these things. But as you promised that client, in a month I am going to make it rank. Yeah. Now it's month end, and because of some reason, the site is not ranking. Probably some algorithm update came, or something happened in between, and the site is not ranking on wherever it was expected. How you are going to handle that situation? And similarly, I'll put this question in a different way. Say you are working on a client's website since last 3 months. Now Google released another update, algorithm update, and the site's rank crashed. Earlier it was coming on 6th position. You were hopeful that it is going to rank on 3rd or 2nd position now. But now it came down to 18th position. Yes. What will happen there? So सबसे पहले तो वेबसाइट नीचे मैं ट्राई करूँगा गूगल एल्गोरिथम समझने के लिए कि नया अपडेट है क्या और मैं कैसा रैंक कर सकता हूँ उस चीज़ पर. अगर विद इन एंड मंथ अगर मैं रैंक नहीं कर पाया, सो आई विल बी ऑनेस्ट विद हिम, द क्लाइंट, कि ऐसा अपडेट आया है और इट विल टेक सम टाइम टू अपडेट. आई डोंट हैव द राइट आंसर टू पिच और वो मान जाएंगे. नो, देयर इज नो राइट आंसर. आई थिंक आई विल बी ऑनेस्ट ऑन द सिचुएशन कि हाँ, अगर इतना टाइम लगने ही वाला है, so rather than promising a fake illusion, I'll tell the truth. Okay. So yeah, many times it happens that you need to make your client little aware about how SEO works. Rather than just taking a project and start working on it, you need to educate that client that how it works, what things are there. I'm not the person just involved in ranking. There are other factors. And all of these factors, if they will be favorable, then we are going to rank at this particular position, right? So that is how we can handle, rather than. And similarly, wherever, if it is Google, it is Bing, every search engine is having its own algorithm and keeps changing. So in your daily report or weekly report, you can include such information like, in this week we had this update. In this week Google was having this update, so we have to keep eye on this activity so that the client is more involved. Now tell me, if you are starting e-commerce website, okay, you have two choices, Woocommerce or Shopify. Which one you will choose? Woocommerce or Shopify? Shopify is the best, but is a lot pricier than Woocommerce. And if the client have money and budget, yes, we can go with the Shopify. Shopify is a lot easier to handle, which has a nice UI too, and it is built for e-commerce, so it is very, very nice. And the WordPress, Woocommerce, it's a very nice product. It's a lot having free options for people who just want to start and sell products. I think I'll go with the Shopify. My first priority is the Shopify. Shopify. Yes. Okay. Now tell me, if you are creating e-commerce, Shopify will provide you some basic template, basic information, and options. Any particular app which you will use in Shopify to make your site look better, perform better? Any app you have in mind? I'll use rather than using the free theme, I'll go with the premium theme, which has a clean UI and nice option and features. Any idea what is the price point for Shopify premium themes? Within a range of 4,000 to 5,000, I think. I haven't much scored because each theme has a different price. So. Okay. So why you are going with premium theme? सबसे main reason यही कि सब UI बहुत अच्छा है and it is pleasing to eyes and people don't read, people scan. So अगर UI अच्छा है तो people likely to buy the product.
अगर UI अच्छा नहीं है, text is not good, and the product image is not quality, and the site should be optimized, and Shopify is known for that. Okay. Yes, of course. Shopify is optimized for e-commerce, and that's the reason why, if you will check Shark Tank, Yes. every startup idea, if they were running e-commerce, almost all of them are running on Shopify. Yes. Okay, now tell me, in email marketing, Yes. do you think email marketing will work nowadays? I think email marketing do work, but not in India too much. Yes, Indian use email marketing, but it's a very casual in India, and they take very lightly for email. In America, email they took email as a private property, they have some private property for email. As India, it's a casual thing, Only professionals use email on a daily basis. So you are saying that the opening rate will be low for emails in India? Opening rate is very low, and if e-commerce are trying to sell its product through email, it's So what other alternative you will use if email is not working in India? I use messaging, common messaging, and those are high opening rates rather than email. Okay. I think that is one solution for that. Okay. So any idea about WhatsApp API? WhatsApp API is WhatsApp allows WhatsApp business allows to send a multiple message at the same time, not to spam the people, to genuinely sell product. Like many companies use, like many banks use like a Kotak Bank, HDFC Bank use it, and many I don't remember which company use, but many company use API. WhatsApp API, and there are many extensions too for WhatsApp to send message. All right. So now what I'll do, I'll give some feedback about this conversation, and then I'm sure it will help you in many ways. So feedback number 1, you as an individual have improved a lot. Okay. Yes. When it comes to having idea about overall digital marketing, you as an individual has improved a lot. Point number 2, now when you have much ideas and you have looked at multiple modules, you are able to connect. You are able to connect the strings now. Okay, so I'm sure you will do well wherever you will go. Few things where you can work. Sometimes, if it happens that you are not aware about that particular thing, it may happen. There is no harm in saying that I don't know about it. I can get back to you on it. That is all right. Okay. Yes, the second step will be you will go and read about that, and you will get back about it. And wherever, if you find that person in your team, wherever you are working, you can catch that person. You can tell him, boss, you asked me that thing. Now here is the answer. Yes. So that will be one thing which you can do. Second thing is, yes, when you have knowledge, when you now know things, it gradually it will happen, but when you carry knowledge, you have to, many times you have to keep many things with you. Like in a conversation, हम लोग क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि सामने वाले को तो पता ही होगा, है ना, या फिर ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है. पर कई बार टीम में ऐसा नहीं होता. Wherever you are working, people are very serious. Sometimes you will find very serious people. They are not always in fun mode. Sometimes they are very serious, they are in serious mode. There you have to show them that you are also serious about your work, you are also serious about your knowledge, and it is your time that you are investing. जैसे ऐसा नहीं होगा कि मेरे से तुम 5 चीज पूछोगे मैं धड़ाधड़ बोल दूंगा, जरूरी नहीं है. जितना मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बोलूंगा, तो मैं आगे नहीं बोलूंगा. सो सिमिलरली यू शुड कैरी दैट थिंग. इसको हम एटीट्यूड तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि भाई जितना रिक्वायर्ड है वहां पे मैं उतना रखूं और माहौल के हिसाब से ऑपरेट करूं. खास तौर से
माहौल ऑफिसेज में ना थोड़ा गरम गरम ही रहता है, हाँ क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा सीनियर है, वो ज्यादा ओपन नहीं होगा, वो ओपन होगा तो उसका सीनियर ओपन नहीं होगा बहुत ज्यादा उसके साथ, क्योंकि वो सर पे चढ़ जाएगा मेरे, हाँ है ना। सो ये एक बैलेंस हमें बनाना पड़ता है। सो जब तुम काम कर रहे होगे एक सीरियसनेस कैरी करो, लिटिल बिट ऑफ सीरियसनेस कैरी करो, तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे, और वो चीज तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगी। तो क्या होगा कि when they need help or if somebody is looking for someone whom they can rely upon and they can ask him to work on, वो एक बंदे पे डिपेंडेंसी रहेगी, सीरियस चीज के लिए तुमसे कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, डिलीवर करेंगे और रिजल्ट आएगा। थोड़ा हम कॉलेज में कैसा कैजुअल हो जाते हैं बातचीत में, हमें हमेशा हम उस मोड में होते हैं, मगर काम के टाइम पे एक सीरियसनेस चाहिए। अगर तुम थोड़ा उसको कैरी करोगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली इन टीम्स एंड टीम एनवायरनमेंट। सो हम लोग तो ठीक है यहाँ पे, बट काम के टाइम पे थोड़ा सीरियसनेस कैरी करना, उससे तुम्हारे कलीग्स भी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा जो सीनियर होगा वो भी एक रिस्पेक्ट से देखेगा, और तुमसे प्रोफेशनली बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा, बिकॉज यू हैव दैट कनेक्शन पॉइंट। तुम लोगों से कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन होता क्या है ना कि तुम फ्लो में बह जाते हो। 2 मिनट वो अगर बंदा सही से बात कर लेना तो तुम फ्लो में बहोगे, उसको थोड़ा पकड़ के रखो, ठीक है। सो ऑलवेज हैव कंट्रोल इन दैट फ्लो। मेरे को पता भी है ना, जब तक बात नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आने वाला वहां, जब तक वो टॉपिक नहीं, तुम मुझसे पूछो फिर मैं बात करता हूँ, है ना। सो दैट इफ यू विल डू, आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल, ठीक है। एंड शेव किया करो यार, मुझे लगता है शेव करने में ठीक ही लोगे, है ना। अच्छा नहीं, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, है ना। सो हैव सम सीरियसनेस ओवर देयर एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। So as a fresher, I have as a fresher mind कि सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए, rather serious होना चाहिए, और you are a fresher, you are there to help. Yeah. Somebody hired you because they need help. Yes. Okay. Now it is time that how you will help me. You will help me by reducing my job. Yes. और by making sure कि मेरे पास अगर बहुत सारा कुछ आया हुआ है तो तुम कुछ ले लो, कर दो। So as a fresher, what is expected is कि तुम tantrum show ना करो अगर मैं तुम्हें कोई काम दूँ। Yes. तुम उसको deliver करो। You become get the thing done person. Yes. मैंने इसको काम दिया है ना, somehow he will get it done. Yes. If that happens, you will create a dependency on that person. Yeah. And if that happens, you will grow. And एक और तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, don't just keep your relation with your senior. Always try to build relation with just one level above. Okay. मतलब टीम लीड के साथ अच्छा रहो, लेकिन जो उसका सीनियर है ना, टाइम निकाल कर उससे कोई बात किया करो। हाँ. Somewhere try to help that person also. Okay. लेकिन इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। That you have to maintain. एक लेवल ऊपर रहो, ठीक है। अगर ये तुम कैप्चर कर पाए, ये चीज बहुत सही से अगर कैप्चर कर पाए वहां पे, तो इसका फायदा क्या होता है कि तुम उसके ऊपर वाले की निगाह में हो, वही तुम्हें जंप करा सकता है। नहीं तो तुम एक सीढ़ी चढ़ते ही रहोगे। तुम्हें अगर 2 सीढ़ियां जंप करनी है तो ऊपर वाले से कनेक्शन बनाओ। लेकिन इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसको बुरा कब नहीं लगेगा, तुम ऑफिस में मान लो लेट तक रुके हुए हो, ये चला गया, इसकी फैमिली है, वो रुका हुआ है, उसका एक लोड है, तुमने उसको हेल्प कर दिया। सर मैं हूं, कुछ कहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। हैव दिस क्वेश्चन ऑलवेज रेडी, कुछ चाहिए क्या। मेक श्योर करो कि ऑफिस में तुम्हारा सीनियर अगर बैठ के काम कर रहा है, डोंट लीव ऑफिस बिफोर दैट, लेट हिम कंप्लीट हिज टास्क। ओके, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें ग्रो करने से, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट यार, डू वेल, बहुत बढ़िया, एंड आई एम श्योर यू विल कीप डूइंग। यस सर, यस, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, कांटेक्ट होते रहेगा सर। श्योर, तो यहीं पे, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।